हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ASA एजुकेशन। आज कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 56 रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल ग्रामर बुक से। ये आपका चैप्टर 8 है, एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, क्लॉज एनालिसिस। इस वीडियो को दो पार्ट में कर रहे हैं पूरी एक्सरसाइज को। तो ये हमारा पहला पार्ट है। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एनालिसिस जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की, उसके बारे में समझ लेते हैं। जब भी हमें कोई कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस दिया जाता है एनालाइज करने के लिए, तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? डिटेल्ड एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं है। स्टूडेंट को सिर्फ इस चीज को ध्यान रखना है कि जो भी गिवन सेंटेंस है एनालाइज करने के लिए, उसके लिए उसको सिर्फ क्या करना है? क्लॉज एनालिसिस देनी है। अब क्लॉज एनालिसिस का मतलब क्या है? सेंटेंस को ब्रेक करो कई सारे क्लॉजेस में, और उसके बाद आपको रिलेशन शो करना है एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है फाइंड आउट करना प्रिंसिपल या मेन क्लॉज क्या है, और सेकेंड स्टेप है सबऑर्डिनेट क्लॉज को फाइंड करना, जिसमें आपको ये बताना है कि हर क्लॉज का प्रिंसिपल क्लॉज से क्या रिलेशन है। तो फाइनली क्या समझ में आया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस अगर आपको एनालाइज करने के लिए दिया जाता है तो सबसे पहले आपको डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करनी है। अगर स्टूडेंट को सेंटेंस दिया गया है क्लॉज एनालिसिस के लिए, तो आप उसको ब्रेकअप करें कई सारे क्लॉजेस में और फिर ये बताएं कि उन क्लॉज का रिलेशन क्या है। तो पहला स्टेप क्या है? प्रिंसिपल या मेन क्लॉज फाइंड आउट करिए, और दूसरे स्टेप में आप सबऑर्डिनेट क्लॉज फाइंड करिए और उसको बताइए कि इन क्लॉजेस का प्रिंसिपल क्लॉज के साथ क्या रिलेशन है। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, एज माई एल्डेस्ट सन वॉज ब्रेड अ स्कॉलर, आई डिटरमिन्ड टू सेंड हिम टू टाउन वेयर हिज एबिलिटीज माइट कॉन्ट्रीब्यूट टू अवर सपोर्ट एंड हिज ओन। तो सबसे पहले यहां पे प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? आई डिटरमिन्ड टू सेंड हिम टू टाउन। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज देखते हैं। पहला है, एज माई एल्डेस्ट सन वॉज ब्रेड अ स्कॉलर। ये है आपका एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन, जो एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों डिसीजन लिया गया, व्हाई द डिसीजन वॉज मेड। दूसरा है, वेयर हिज एबिलिटीज माइट कॉन्ट्रीब्यूट टू अवर सपोर्ट एंड हिज ओन। ये है आपका एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस, एक्सप्लेनिंग वेयर हिज एबिलिटीज वुड बी यूजफुल। दूसरा सेंटेंस है, क्लाइव had been only a few months in the army when intelligence arrived that peace had been concluded between Great Britain and France. अब इसमें प्रिंसिपल क्लॉज, Clive had been only few months in the army. अब सबऑर्डिनेट क्लॉजेस देखते हैं। पहला है, when intelligence arrived, adverbial clause of time, explaining when the action in the main clause occurred. दूसरा है, that peace had been concluded between Great Britain and France. ये है noun clause, acting as the object of arrived. I had a partial father who gave me a better education than his broken fortune would have allowed. अब इसमें प्रिंसिपल क्लॉज, I had
a partial father. Subordinate clauses. First is, who gave me a better education? Relative clause, modifying father. Second is, then his broken fortune would have allowed. Adverbial clause of comparison, comparing the education given to the limits of his fortune. Next sentence, he told us that he had read Milton in a prose translation when he was 14. Principal clause, he told us. Subordinate clauses, first, that he had read Milton in a prose translation. Noun clause, object of told. Second, when he was 14. Adverbial clause of time, explaining when he had read Milton. With whatever luxuries a bachelor may be surrounded, he will always find his happiness incomplete unless he has a wife and children. Principal clause, he will always find his happiness incomplete. Subordinate clauses, first, with whatever luxuries a bachelor may be surrounded. Adverbial clause of concession, explaining despite the luxuries. Second, unless he has a wife and children. Adverbial clause of condition, explaining the condition under which his happiness would be complete. Among the many reasons which make me glad to have been born in England, one of the first is that I read Shakespeare in my mother tongue. Principal clause, one of the first is that I read Shakespeare in my mother tongue. Subordinate clauses, first, which make me glad to have been born in England. Relative clause, modifying reasons. Second, that I read Shakespeare in my mother tongue. Noun clause, explaining the reason. He, Pope, we are talking about, professed to have learned his poetry from Dryden, whom, whenever an opportunity was presented, he praised through his whole life with unvaried liberality. Principal clause, he professed to have learned his poetry from Dryden. Subordinate clauses, whom he praised through his whole life with unvaried liberality. Relative clause, modifying Dryden. Whenever an opportunity was presented. Adverbial clause of time, explaining when the praising occurred. We who are fortunate enough to live in this enlightened century hardly realize how our ancestors suffered from their belief in the existence of mysterious and malevolent beings.
principal clause, we hardly realize subordinate clauses who are fortunate enough to live in this enlightened century. Relative clause modifying we, how our ancestors suffered from their belief in the existence of mysterious and malevolent beings. Noun clause, object of realize. We cannot justly interpret the religion of any people unless we are prepared to admit that we ourselves are liable to error in matters of faith. Principal clause, we cannot justly interpret the religion of any people. Subordinate clause, unless we are prepared to admit. Adverbial clause of condition, providing the condition under which the main clause holds, that we ourselves are liable to error in matters of faith. Noun clause, object of admit. Milton said that he did not educate his daughters in their languages because one tongue was enough for a woman. Principal clause, Milton said. Subordinate clauses, that he did not educate his daughters in the languages. Noun clause, object of said. Because one tongue was enough for a woman. Adverbial clause of reason, explaining why Milton didn't educate his daughters. तो यहां पर हम अपना फर्स्ट पार्ट खत्म कर रहे हैं. इसका जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है 11 to 21 वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन. मिलते हैं अगले पार्ट में.